which comes, and that is effect of beam and freeboard on GZ curve. Effect of beam and freeboard on GZ curve. So I'm starting off with effect of freeboard on GZ curve. I'm starting with this first. Effect of freeboard on GZ curve. So I'm comparing two ships. This is vessel A. This is vessel B. Vessel A has a lesser freeboard than vessel B. This is the draft of A, freeboard of A. This is the draft of B, and therefore the freeboard of B. So if I have to compare two ships, then I have to make certain assumptions. Okay, I have to make certain assumptions before I do that. So I'll have to make some assumptions, and the first assumption that I'll make is that both vessels. Very good, sir. HD, sir. SD चलो SD ओके, अच्छा एचडी हो गया. ओके, चलो आज का प्रमोशन हो गया. Yes, sir. Okay, so we're comparing two vessels A and B. Freeboard of A, draft of A. Freeboard of B, draft of B. Quite obviously, freeboard of A is less than freeboard of B. Now, when I have to compare the GZ curve of these two ships, I'll have to make some assumptions. So my first assumption is there should be some things which should be equal between A and B. Then only can I compare. So both vessels have the same beam. The beam is the same. The width of the two vessels has to be the same. Then only can I compare the two. Then the two vessels should have the same draft. They should have the same displacement. They should have the same kg. They should have the same beam, same draft, same displacement, same kg. तभी मैं इनको कंपेयर कर सकता हूं. ये सब कुछ सेम होना चाहिए. ओके, अब इनको कंपैरिजन शुरू करता हूं. Vessel A and vessel B. Okay. So दोनों को कंपेयर कर रहा हूं अब मैं. तो मतलब ये चारों आइटम जब उनके सेम रहेंगे, दोनों ज्यादा हो, तो ये अपन मतलब ये कर सकते हैं कंपेयर. हाँ, because I cannot compare GZ curve of a VLCC with
handy max. I cannot. It is not justified, no? I Okay, cannot sir. compare apples with banana. I cannot do that. There should be some similarity between the two fellows. Then I can compare one parameter, na? हाँ नहीं सर सर कहना है मतलब यहाँ पे अपना बीम ठीक है, ड्राफ्ट ठीक है, तो वेट भी मतलब होना चाहिए सेम सेम, ये बिल्कुल डिस्प्लेसमेंट सेम भी। डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए और केजी भी सेम होना ओके चाहिए, तभी मैं कंपेयर कर पाऊंगा उनको, उनके फ्री बोर्ड का इफेक्ट को जीजेड कर्व पे। ओके सर। So now I'm starting to compare the two fellows. So basically, freeboard of A is less than freeboard of B. That is given to us. Draft of A is equal to draft of B, given to us. So can you tell me something about KB? If I have to compare KB of A and KB of B. सर दोनों तो सेम सर रहेंगे। सेम सेम Same होगा सर। सेम रहेंगे। क्यों सेम रहेंगे? सर अंडर वाटर water वॉल्यूम रहेंगे, सेम है। नहीं नहीं तो सेम अंडर रहेगा वाटर वॉल्यूम वॉल्यूम। अंडर वाटर वॉल्यूम सेम है ड्राफ्ट ड्राफ्ट जी सेम ही है। ड्राफ्ट सर इक्वल है। और ड्राफ्ट भी इक्वल है और शेप भी सेम है अंडर वाटर की, सो इसलिए केबी भी सेम होगा। Okay. Now let us come to PM. PMT is equal to IT by V is equal to LB cube by 12 LBD is equal to B square by 12D. Breadth is same, draft is same, so BM will be same. Yes. So BM of A will be equal to BM of B. ठीक है, is this okay? सर ये टी का क्या मतलब है? T कम अभी एक्चुअली वो मैं कराऊंगा। T is transverse. T is silent. Usually जब हम लिखते हैं BM तो T is silent. क्या होता है, क्या है वो भी I'll be doing it in the next month module. उसमें आएगा. So I'll be coming to this. So BMT equal to क्या लिखा था? I upon V. BMT is equal to IT by V. And IT is equal to LB cube by 12. V is LBD. So this will be equal to B square by 12D. काट दिया कॉमन वालों को. सर Breadth. आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया। I is moment of inertia of the rectangular water plane. B is same, draft is same, so BM will be same. So BM of A is equal to BM of B. Is that okay? यस। Okay. KB plus BM gives you KM. केएम Can you tell me something about KM now?
सर सेम रहेगा फिर? सेम रहेगा सर। सेम रहेगा। Does Yeah. everybody agree on this? So km same है. Okay. Km minus kg gives me gm. Kg is same. So gm is same. Agreed? दोबारा बोलना सर। Km minus kg is equal to gm. Or kg plus gm is also equal to km. यस सर। So gm of A is equal to gm of B because km भी equal है, kg भी equal है. Is that okay with everyone? यस सर। Okay. Okay. So अगर दोनों की जीएम सेम है तो दोनों का टेंजेंट भी सेम है. Tangent of A will be equal to tangent of B on the GZ curve. सर ये थोड़ा बता दीजिए सर। अच्छा, वो जब GZ कर्व बनाए थे हमने तो हमने कहा था कि वो जो टेंजेंट है ये दोनों कर्व एक साथ चलेंगे तो दैट मीन्स जो उसका टेंजेंट होगा वो सेम है. तो इसका मतलब जो GZ Yes. कर्व है वो भी सेम है. हाँ Yes or no? टेंजेंट तो मतलब इनिशियल जीएम की बात करते हैं वो सर हाँ, इनिशियल जीएम की बातें हो सर रही जो हैं. हाँ सर सर जो इनिशियल यहाँ जीएम पे की सर बात कर रहे हैं. ये पूछना था सर, यहाँ पे जो आपने ये किया है, ग्राफ बनाया है, इसमें डाउट था। ये जो इनिशियली आपने ये हल्का सा टेढ़ा बनाया है, ये हमें ऐसे ही हमेशा करना है सर, पेंटिंग हाँ, मतलब ये कर्व हमेशा इनिशियली हमेशा जो आउटवर्ड? है हाँ मतलब T1 कर्व जो है वो कॉनकेव अप करता है. जी मतलब सर, चम्मच अप करता है. क्योंकि ये टेंजेंट पे सारे आंसर डिपेंड करते हैं सर, तो अगर ये हम ऐसा बनाएंगे तभी आंसर सही आएंगे सर। हाँ, दैट्स राइट. जी That's सर right. ठीक है, फिर तो ठीक है सर, मतलब हल्की सी पेंटिंग ऐसे ही करनी पड़ेगी ये। हाँ, बिल्कुल. ठीक ठीक है सर। तो सो बेसिकली जब आपको कर्व बनाना होता है तो ओके, आई एम डेविएटिंग ऑफ स्लाइटली बट लेट मी डेविएट ऑफ. तो एक्चुअली क्या है कि यू नो योर डिस्प्लेसमेंट. Okay, I'm not in this topic now. I'm on some other topic since he asked me this question, so I'm just clearing that doubt. I know my displacement in any question. यस So सर। if I know my displacement, supposing it's a Hinship question, then I go into the hydrostatic tables. I know my Km. यस सर। Okay. I know my Km. I know my Kg also. यस सर, करेक्ट सर, गुड जी So हाँ। therefore, I know my Gm also. यस सर। यस सर। Okay. So Gm मेरे को अगर पता है तो on my y-axis I go to the Gm because I know this Gm. यस सर।
I draw a horizontal line, right? Then on 57.3, 0.3. I erect a perpendicular. Yes, sir. Agreed? So मेरे को पॉइंट मिल गया, इनिशियल पॉइंट भी मुझे मिल गया, इसका मतलब मुझे टेंजेंट मिल गई. Yes, Got sir. it? Now, supposing I'm given 2 points, first point here and second point here of the GZ curve. Can I join it and make it into a curve such that this tangent is the tangent to that curve? Like this? Got it? जी सर, प्रैक्टिकली हम ऐसा ही करते हैं सर, जीएम हमें पता होता है and then we go like that. So therefore, you can use this jugaad technology in the exam. ठीक है सर, क्योंकि यहाँ पे हम जीएम निकालते हैं इसलिए हमें थोड़ी सी पेंटिंग करनी पड़ती है, अदरवाइज प्रैक्टिकली हम जीएम से आते हैं नीचे की तरफ and then we know. Okay sir, ठीक है. And now I can, once I have done that, then I can draw my GZ curve, whichever way it goes, आगे पीछे, whatever it goes. Then I know. ठीक है सर, understood sir. ठीक है? So this is how Yes. you can do practically to join it in case you face that issue in any question. जी sir. Okay. Now coming back to this one. So मेरे को now coming back. Okay. So my tangent is the same. That means my GZ curve origin. GZ curve origin is same. Agreed? Because Yes sir, this is my दोनों का tangent. सेम ही होगा. तो मेरा origin same है मेरे GZ curve का. Agreed? दोनों का origin same है. Is that okay with everyone? Yes sir. All right. अब और element को लेके आ रहा हूँ. Now I'm bringing one element called as angle of deck edge immersion. Angle of deck edge immersion. Okay. So angle of deck edge immersion, basically this deck edge, when it touches here, this will be called as theta A. When this fellow touches over here, this will be called as theta B. सर ये वही ना सर, डेक लाइन जो लोड लाइन पे होती है वो वाला टच करना है. ये जो डेक एज है, हाँ लोड लाइन, यूर राइट, जिसको डेक लाइन कहते हैं. डेक लाइन, ठीक है सर. तो एंगल ऑफ डेक एज इमर्शन. So therefore, the angle of heel at which the deck edge immerses. ओके सर. सर डेक एज का मतलब सर व्हेन द डेक लाइन इमर्स ना सर, वही मतलब है ना सर? हाँ, correct. Deck edge. So therefore, quite obviously, theta A is less than theta B in this case. There is no doubt on that. Yes. Agreed? The angle of deck edge immersion of A is less than angle of deck edge immersion of B. Is that okay with everyone?
Yes, sir. Yes, sir. Okay. अब now here is a vessel A. सपोजिंग मैंने इसको 5 डिग्री का हील दिया, फिर मैंने 5 डिग्री और दिया, 10 डिग्री दे दिया। 10 डिग्री में A का डेक एज इमर्स कर गया, तो 10 डिग्री में B का डेक एज तो हवा में होगा। यस सर, एग्रीड? यस सर, ओके, तो A का डेक एज टच कर गया, B का डेक एज अभी हवा में है। तो अब इधर आ जाओ डायग्राम में। सपोजिंग ये कर्व दोनों का एक साथ चला था, दोनों भाई बंधु एक साथ चले थे, ए और बी। 10 डिग्री पे ए टच कर गया है, बी हवा में है। अब 11 डिग्री, 10 के बाद 1 डिग्री जब 11 होगा, 1 डिग्री और गया, तो इसका जो राइटिंग लीवर है और इसका जो राइटिंग लीवर है उसमें कोई अंतर होगा? सर सिंस कर्व सेम है तो सेम चल रहा है तो सेम ही रहेगा फिर तो। अब सोचो। तो राइटिंग लीवर ऑफ बी ज्यादा होगा सर उससे। होना चाहिए, होना चाहिए बी सर का डिफरेंस। ज्यादा क्यों होगा? तो क्योंकि उसका अभी डेक ऐसे इमर्ज नहीं हुआ, मतलब अभी भी मतलब वो है थीटा ऊपर, ज्यादा तो ज्यादा ही होगा। उसमें Yes, राइटिंग मूवमेंट है, मतलब इसका correct. तो ये बेसिकली इसका राइटिंग तो इमर्स लीवर कर क्या चुका दे रहा है है आपको? इट इज गिविंग यू जी। द एबिलिटी टू राइटन बैक। तो यस सर। अगर अगर मेरा ए की का डेकेज इमर्स कर गया है और बी का डेकेज अब भी हवा में है, तो द एबिलिटी ऑफ बी टू कम बैक will be more than the ability of A to come back. Why? यस सर। यस सर, Why? सर बी का रिजर्व बॉयंसी ज्यादा है बोल सकते हैं। Okay. मैं रिजर्व बुओयंसी को यूज नहीं करना चाहता था, बट यू वांट टू यूज इट, इट्स फाइन। बी के रिजर्व बुओयंसी ज्यादा है, बट बेसिकली अगर मेरा ये डेकेज ए का इमर्स कर गया है तो मेरे यहाँ पे डेक पे पानी आ गया है। सर बी का Yes. राइटिंग लीवर ज्यादा रहेगा क्योंकि सर उसकी टेंडेंसी रहेगी टू कम बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। एब्सोल्युटली राइट। उसकी क्योंकि बी सर की टेंडेंसी टू कम बैक टू ओरिजिनल सेल्फ is greater than the tendency of A, because A का तो यहाँ पे डेकेज में पानी आ चुका है अब, तो वो इसको डैम्पन कर रहा है। सर दो चीज, एक चीज पूछनी थी सर। हम्म, सर एक तो ये जो बी है, मतलब हम एक्स एक्सिस पे ज्यादा जाएंगे, ये एक्सिस से नीचे ग्राफ में देखेंगे, नीचे सर नीचे जो ग्राफ है अपना, एक्स एक्सिस पे ज्यादा आगे जाना पड़ेगा, इसलिए जी जेड की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी बी के लिए, और ए के लिए मतलब थीटा की वैल्यू, थीटा ए है ना सर एक्स एक्सिस पे, तो थीटा कम रहेगा, और कर्व तो इधर, तो फिर जी जेड की वैल्यू कम रहेगी ए के लिए। नहीं, इस ये जो थीटा है यस सर। ये तो एंगल ऑफ डेकेज इमर्शन है, यस सर। राइट? तो कहने का मेरा मतलब ये है कि अगर मैं यहाँ पे ये 10 डिग्री बना दूं, हाँ सर। तो 10 डिग्री तक तो दोनों भाई बंधु एक साथ चल रहे थे, यस सर। लेकिन इसके बाद ये दोनों भाई बंधु अलग हो जाएंगे। ये कहने की कोशिश कर रहा हूं मैं। ये दोनों अपने अपने रास्ते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि बी तो अभी भी हवा में है, यस सर। वो अपनी नॉर्मल ट्रेजेक्टरी पे चल रहा है, लेकिन ए जो है वो डैम्पन हो गया है बिकॉज ऑफ द पानी ऑन द राइट हैंड साइड, ऑन द स्टारबोर्ड साइड। सो अब ये डैम्पन हो गया है, तो ये इसकी एबिलिटी टू कम बैक टू अपराइट इज रिड्यूस्ड। यस सर। So therefore the two curves will now go on a separate path, and therefore the curve of A will get dampened and will fall jaldi like this.
whereas the curve of B will go on its own path at some point in time and fall later. This is the Yes, curve sir. of A, this is the curve of B. Is this understood? Yes, sir. So कहने का मतलब ये है, so now you can write down point number 10. Once the angle of DEI, सर एक बार रिपीट करना सर once once the angle of DEI, delta echo India, of alpha is reached, say at 10 degrees, the GZ curve of A and B get split apart. This is so because the rate of increase of GZ, the rate of increase of GZ of alpha decreases as compared to the rate of increase of GZ of Bravo. सर rate of decrease ना सर I'll repeat once again. The rate of increase of GZ of alpha decreases as compared to the rate of increase of GZ of Bravo. जिस रेट पे ये GZ बढ़ रहा था वो रेट डिक्रीज कर रहा है. GZ तो अभी भी इंक्रीज कर रहा है, तो जिस रेट पे बढ़ रहा था वो रेट डिक्रीज कर गया. So as a result, the GZ curve of A will fall under the GZ curve of Bravo. The GZ curve of A falls under the GZ curve of Bravo. If that happens, now you start off on all those 8 parameters of GZ curve. शुरू हो जाओ अब. GZ max of A is less than GZ max of B. शुरू हो जाओ. अब 8 पॉइंट हैं आपने लिखने. एंगल ऑफ हील एट GZ max, जो फर्स्ट क्लास में करवाया था मैंने, जो 8 पैरामीटर्स याद है. यस सर. yes sir अब वो सारे 8 पॉइंट लिख दो बस यहाँ पे.
angle of vanishing stability of A is less than angle of vanishing stability of B. GM initial. Range of positive stability of A is less than range of positive stability of B. GM initial is same. वो मैंने शुरुआत में पहले ही लिख दिया. GM initial of both is the same, mind you, because the tangent is the same. Writing moment. Writing moment of A, area under the curve of A, Dynamical dynamical stability. stability of A. तो वो सारे पॉइंट आ गए. ये कंपैरिजन है बस आपका. Is this okay? तो ये पूरा का पूरी राम कहानी लिख देना. सर हाँ जी. सर, ये पास्ट पेपर में कुछ क्वेश्चंस थे रिलेटिंग सेम कि फ्री बोर्ड से इफेक्ट बताना है, तो हम लोग स्टार्ट जैसे ए और बी और डायग्राम बना के और फिर कर्व बना के करना है, या फिर सीधे वंस द डेक इमर्शन से वहां से शुरू करना है? ना, ये जहां से मैंने शुरुआत करी थी बस वही है. पूरा आंसर आपको बता रहा हूँ मैं. ये डायग्राम ठीक ये है. बनाओगे, इजेड कर्व ये बनाओगे, ये टेबल यस सर. बनाओ, ये लिखोगे और जो आपको डिक्टेट करा है बस वो लिख दोगे आंसर. ये आपका आंसर रेडीमेड हो रहा है. और क्या? हाँ सर, क्योंकि इसमें काफी क्वेश्चंस है सर जीजेड करके यही वाला सेम. पॉपुलर क्वेश्चन है. दिस इज लाइक अ ऑलमोस्ट लाइक अ श्योर शॉट. यस सर. सर वो जीएम इनिशियल सेम के लिए 57.3 पे कर्व दोनों एक जगह पे नहीं आने चाहिए थे? नहीं, आप समझे नहीं. वो 57.3 तो बेसिकली आपको टेंजेंट देता है और उस टेंजेंट से आपको कर्व ओके मिलता है. मैंने तो ओके सर. वो तो मेरे को जरूरत नहीं है ना यहाँ पे दिखाने के लिए. मेरे को तो मेरा फोकस बेसिकली ए और बी के कर्व को दिखाना है कि ए फॉल्स अंडर बी. यस सर, अंडरस्टूड. क्योंकि सर इनिशियल कर्व दोनों का सेम था, इसलिए सर टेंजेंट सेम हो गया, इसलिए जीएम भी सेम हो गया. बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक. सर ये 12th नंबर सर क्या लिखा है सर पॉइंट 12th नंबर का एंगल ऑफ हील? Heel at GZ max. Angle of heel at GZ max of A is less than angle of heel at GZ max of B. वो जो उसके 7 पॉइंट थे ना, 8 पॉइंट से एक माइनस जीएम को माइनस कर दो, बाकी Okay. 7 पॉइंट वही. यस सर. तो ये 14 पॉइंट क्या है सर? 14 Point number 14 is range of positive stability of A is less than range ROPS of A is less than ROPS of B. सर सर ये बोल मतलब समझ में तो आ रहा है कि यहाँ पे जो एंगल ऑफ डेक इमर्शन है ए का कम होगा, बी का ज्यादा होगा, पर फिर सर अगर जैसे देखा जाए तो दोनों बॉक्स शेप वेसल है और दोनों को पर एंगल तो जैसे परपेंडिकुलर उसका बीच से सेंटर लाइन से अगर देखेंगे तो दोनों को ट्रेवल सेम करना पड़ेगा ना उसको टच करने के लिए एक तरीके से. ये जो अपना डेक इमर्शन वाली लाइन जो है वो एक तरीके से वो पूरी नीचे ही होगी, तो पैरेलल टू द वाटर सरफेस, तो तभी तो टच करेगा ना सर. नहीं, ये कुछ ऐसा होगा. It will come something like this. See, अगर ये 10 डिग्री में इसका डेकेज टच करता है तो इसका शायद 20 में करेगा ना. यस सर, क्योंकि फ्रीबोर्ड है उसका ज्यादा है. क्योंकि उसका फ्रीबोर्ड ज्यादा है ना, तो ये तो 10 पहले ही कर गया टच. हाँ सर. ओके. ये 20 पे करेगा, तो दैट मींस इस पे जाके तब जाके इसका डेकेज टच होगा ब्रावो का. हाँ सर. दैट इज व्हाट आई एम मतलब सर ये कह सकते हैं कि सर जो डेकेज का एंगल रहेगा वहां से कर मोल्डिंग होना शुरू हो जाता है सर. तो बेसिकली ये डेकेज का पॉइंट का इंपॉर्टेंस क्या है? ये पॉइंट उसकी इंपॉर्टेंस ये है कि ये पॉइंट है, सपोजिंग पॉइंट आर. इस पॉइंट आर को कहते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन.
इस पॉइंट आर को कहते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन, मतलब it is that point at which the slope of the curve changes. ये कर्व इनिशियली कॉन्केव अप था, इस पॉइंट आर के बाद ये कर्व कॉन्केव डाउन हो जाता है, इसकी कॉन्केविटी कर्व की बदल जाती है। तो चम्मच अप से ये चम्मच डाउन हो रहा है, ये पॉइंट आर। सर दोनों ये के इसकी लिए ए इंपॉर्टेंस एंड है। बी दोनों के लिए सर। हाँ, अपने अपने रिस्पेक्टिव पॉइंट पे। मैंने खाली ए का दिखाया आपको, ब्रावो का दिखाया ही नहीं, क्योंकि मुझे उसकी जरूरत नहीं है। उसका भी कहीं पॉइंट होगा 20 डिग्री पे जाके होगा शायद, ओके बट इट्स नॉट रिक्वायर्ड फॉर मी। सो दिस पॉइंट आर से अगर मैं परपेंडिकुलर डाउन ले जाऊं तो जहां पे ये हिट करेगा दैट विल बी कॉल्ड एज एंगल ऑफ डेकेज इमर्शन ऑफ whichever curve you are on. So the slope of the curve is changing from concave up to concave down. That is the importance of point R, which is the point of contraflexion. The slope of the curve is changing. इसलिए वो इनिशियली वो थोड़ा सा लिप देनी पड़ती है, and that becomes the lip of the bell of the घंटी, and that is why we say bell shaped curve. ठीक है, is that okay? सर एक ये 11th पॉइंट था जीजेड कर्व ए इज लेस देन जीजेड कर्व बी। सर ये कोई क्वांटिटी राइट क्वांटिटी नहीं है ना? नहीं नहीं, the curve of GZ of A is lower or lesser than the curve of GZ of B. The GZ curve of A is lesser than the GZ curve of B, or is lying under the GZ curve of B. ओके गॉट इट सर। हाँ जी, ये स्टेबिलिटी बुकलेट में सर पेज नंबर 22 पे एक जीजेड कर्व दिया हुआ है हेंडशिप का सर। एक मिनट, कोई किसकी बात कर रहे हो? सर पेज नंबर 22 पे है एग्जांपल शोइंग यूज ऑफ क्रॉस कर्व। नहीं, you're talking about which book? You're talking about सुब्राज? particulars. हाँ सर हेंडशिप टेबल में सर, टेबल में। अच्छा, पर्टिकुलर्स की बात कर रहे हो? Okay. Particulars की बात। हाँ, अब तो बोलो। सर उसमें मतलब एक तरीके से ऐसा लग रहा है कि अराउंड 25 डिग्री से जस्ट पहले थोड़ा सा कर्व चेंज हो रहा है, तो मतलब हम उसको वो पॉइंट आर होगा इसके लिए। एंगल ऑफ डेकेज इमर्शन? यस सर। हाँ, वो होगा पॉइंट जहाँ पे उसकी कॉन्केविटी चेंज हो रही है। हाँ, क्योंकि वैसे तो अगर स्लोप देखा तो सीधा ऊपर जा रहा था, और यहाँ पे 25 से जस्ट थोड़ा पहले इट इज नाउ कॉन्वेक्स, मतलब एक तरह से गोइंग डाउन, वहां से स्लोप चेंज हुआ है। See, please try to understand one thing. ये तो मैं थियोरेटिकल आपको बता दिया है, बट मेनी टाइम्स आपका जब डायग्राम आप बनाओगे कभी, जब भी कभी, तो ऐसा भी होगा तो कि जब आपने कर्व बनाया तो आपका कर्व ये चलता जा रहा है, लंबा स्ट्रेट लाइन चल रही है। अब फिर आप बोलोगे सर मेरे को तो पता ही नहीं है कि ये कॉन्ट्राफ्लेक्शन कब है इसका। एक एक लाइन चल रही है सीधी, मतलब शुरू में ऐसे करके और फिर सीधी लाइन है। अब मैं आर कैसे लूं? तो इसलिए दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ आवर न्यूमेरिकल्स और एनीवेयर। It is just a theoretical point for our discussion, but otherwise I'll never be asking you which is the point of contraflexure ever. I'll never ask you, because it can carry on for a very long range in a straight line manner. Even when the slope is bigger, sir, when the if Even vessel is complying the minimum criteria. Right. So therefore even when the minimum criteria वाली बात आएगी तब भी ऐसा कभी होगा। बट ये है कि यस कि उसको हाउ टू ब्रेक दैट, जहां पे जिस टू रेंजेस की आपने पॉइंट्स ले लिए, जहां से
स्लोप शुरू होती है और जहां पे स्लोप खत्म होती है, वो दोनों ले लिए अपने रेंजेस, उन दोनों की मीन वैल्यू लेके देन यू कैन कैलकुलेट. दैट इज अनदर वे टू डू इट. सो मीन वैल्यू दैट कहाँ इज से सर, मतलब ओरिजिन से एंड तक? मतलब जहां पे स्लोप शुरू हुई और जहां पे सर स्लोप खत्म होती है. ठीक है सर, ओके. तो उनके दो पॉइंट्स के एक्सट्रीम्स के मीन वैल्यू ले ली. दैट इज अनदर वे. अब स्ट्रेट लाइन में तो सर ओरिजिन से एंड ही लेना पड़ेगा ना सर? तो ओरिजिन से एंड लेना पड़ेगा. बट बेसिकली अगर किसी सेक्शन में a part of the section of the curve is a straight line, then you can take those two extremities and the mean value of that. But आपके सर ऐसा कोई ऐसा आएगा क्वेश्चन पूछता है क्या सर? इट इज नहीं. नॉट, Nothing, बस not required. थियोरेटिकली कभी कभार डिस्क्रिप्शन पूछेगा तो पूछेगा. बस नहीं, कभी कभी आज तक कभी आया ही नहीं है कोई इस पे कोई क्वेश्चन. Not required. So this much only information is needed. That's it. Let's not concentrate any. Let's not spend any more time on it also because जिसको रख दो. एंगल ऑफ फ्लडिंग क्या होता है सर? एंगल ऑफ फ्लडिंग. एंगल ऑफ फ्लडिंग, ओके, इसका जो कोरिलेशन है एंगल ऑफ लीकेज इमर्शन और फ्लडिंग का, मैं एक डायग्राम बना देता हूँ, उससे क्लियर हो जाएगा. ओके, सो अगर ये तो मेरा एंगल ऑफ लीकेज इमर्शन हो गया, ठीक है, तो इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है. एंड यहाँ पे मेरी ये साउंडिंग पाइप्स या एयर पाइप्स एंड वेंट्स हैं. And now when these openings get exposed to the water, this is called as angle of down flooding. This is angle of deckage immersion and this is angle of down flooding. So quite obviously angle of down flooding will be more than the angle of deckage immersion. Yes sir. Which is quite obvious. So basically the angle obtained due to the height of the air pipes, sounding pipes, vents, booby hatches, hatch covers, etc., etc., all that. That is known as angle of down flooding. ये difference है दोनों में.